सो गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास रे हम क्वेश्चन देखुले ड्यू टू सम पावर फेलियर आम कंप्लीट कर पारलेनी है। तो क्वेश्चन वाज दिस, देयर इज एन इनफाइनाइट वायर of linear charge distribution lambda. There is a plane प्लेन ऊपर तो रखा है √3a/2 हाइट रे। एटा हला √3a, ए हाइट हला √3a/2, एटा हला l। तो ये देखिए केते फ्लक्स जीवो जो सरफेस टी बना है छि एटा धरो x y z प्लेन रो x y प्लेन रो छि, एटा हम कर दउ x y प्लेन। x axis, sorry, x axis, eta y axis, eta z axis. This was the question. तो सदा बेले जेतेबेले भी एभले क्वेश्चन गोटे इनफाइनाइट कंडक्टर अछि तालाई कोनसी सरफेस रे पचारुछ क्वेश्चन रे, तमे आगे ताको गोटे गॉसियन सरफेस एभले ड्रा करबा ट्राई करिवो जोडे किछि चार्ज को एनक्लोज करथबो विथ सम सिमेट्री, किछि गोटे सिमेट्री थिबा दरकार हैला, ताल तमे इजीली ताको सॉल्व कर दे परिबो। देखो केमथि हो तो मोडा को बने दउछि बॉक्स टे देख। रेड कलर रो करूछि, हैला। ए तळ सरफेस टी पचारिछि, ए सरफेस टे हम पचरा हिछि। ई सरफेस टे पचरा हिछि तो वायर जोडी जाइछि, तो याकर लेंथ थोड़ा सो लेखि लेखि दउछि कोटा करते कोन देइछि, एटा एल लिखाइछि कि नहीं, दिस इज एल, एटा √3a, एटा को भी √3a नै जाइछि कोन में बुझ परियो, तले एटा एल हला, ए साइड टा √3a। मु कोन भाई ओला √3a हाइट नै गले कोन भाई ना √3a/2 रे ओआर टी एंट्री करछि, इनफाइनाइट कंडक्टर रे एंट्री करछि, √3a/2 रे इनफाइनाइट कंडक्टर टी अछि माने उधारे, तो सिमेट्री दरकार मते ना।
ହେଲା ଲାମ୍ଡା ଏବେ କରିପାରିବ ओके देख मु कहूँ चार्ज एनक्लोज केते ये जो बनई मु किए कहि परिबो क चार्ज एनक्लोज ये जो मु क्यूब टी सॉरी जो बनई मु क्यूब तो नो रेक्टेंगल टाइप रो रेक्टेंगुलर चार्ज एनक्लोज्ड बढ़िया तो ये भितर एल लेंथ अच्छी बुझला लैम्डा एन नेक्स्ट तल देखो एठु जो फील्ड्स गुडी को बाहरिबो सिलिंड्रिकल बाहरिबो जो दीटा सरफेस रे एंट्री हेची √3 वाला हैला हां जो कहतली ए देखो एठु ए तक √3 हाइट सॉरी √3/2 हाइट √3a/2 এই सरफेस रे पुणी এই सरफेस तक भी से √3a/2 सिमेट्री उठा होची ना सेट में √3 से हाइट को नहीं गली क्लियर तल जो दीटा सरफेस रे से एंट्री जी ता पई फ्लक्स केते हबो जो सरफेस रे एंट्री हेची जो सरफेस रे एंट्री हेची ता पई फ्लक्स केते हबो ए जो दीटा साइड सरफेस जोटरे एंट्री हेची और जोटरे बाहरी छी जहा पे कहबा सेही दीटा सरफेस पे फ्लक्स धरिनिया तुम स्क्रीन तो मोबाइल स्क्रीन से गोटे तारोटा एंट्री करूच तारोटा लाम्बडा चार्ज अच्छी से तार ताले से तार लगी सेठी फील्ड सॉरी फ्लक्स केते हबो तुम स्क्रीन ऊपर बुझ पारछो तो एटा तुम स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन ए गोटे तारोटा एंट्री कला एटा लाम्बडा अछि या लगी फ्लक्स एठी केते हबो तार लगी एरिया रे फ्लक्स केते हबो फ्लक्स माने कौन मैथमेटिक्स को भूली जाओ व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स फ्लक्स माने एटा नुह एटा फ्लक्स मैथमेटिकली फ्लक्स रो डेफिनेशन कौन सदा फॉर्मूला घुसिया चक्कर रहले सेटा असुविधा हो फॉर्मूला घुसिया चक्कर रहले सेटा ही असुविधा हो यस थ्रू ए पॉइंट नुहे थ्रू ए एरिया तो एठू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड बाहर एठू जो लिनियर चार्ज रो सब इलेक्ट्रिक फील्ड भलिया बाहर ए सरफेस को किसी एंटर करूना सब सरफेस ऊपर अछंती तो फ्लक्स जीरो मैथमेटिकल भी जो देखियोटा ई एरिया वेक्टर ऊपर को 90 डिग्री एंगल ये cos 90 q by 6 एप्सिलॉन नॉट किमती हो भाई तो पॉइंट चार्ज की तो सिमिलरली ए जो दीटी सरफेस देखु छ ए जो दीटा सरफेस या पई जीरो हो ए सरफेस और ए सरफेस देकी कौन सी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी नथिबे ता पई जीरो सिंपल तो बाकी जेतिकटा सरफेस रे सहितरे सब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन जहावा कथा हिथि तो देखो बाकी आ कटा सरफेस रे 1 2 3 4टा दीटा तो गला तो ता भीतर टोटल फ्लक्स जदी कहबा हमें
टोटल फ्लक्स Q बाई Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हो। तो Q एनक्लोज तो हमारा लैम्बडा इनटू L है। तो देखो ये बाकी जो चारटा सरफेस पूरा एका भलिया ना नहीं, पूरा समान एरिया नहीं, पूरा सिमेट्री ना नहीं, समस्त एरिया समान अच्छी ना अलग अच्छी बाकी चारटा सरफेस रो, बाकी चारटी सरफेस रो एरिया समान अच्छी ना अलग अच्छी, सेम अच्छी। ताहले जदि सेम अच्छी এই ସବୁତକ ଫ୍ଲକ୍ସ এই ଚାରିଟି ଯାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କୋଉଟା ପଚରା ହେଇଛି ଖାଲି ତଳ ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଡିଂ କରିଛି, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ସରଫେସ ଏଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବରିଂ କରି ଦଉଛି, शेडेड ବୋଲି ଲେଖି ଦଉଛି, फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया 1/4 of lambda L by epsilon naught। বুঝ পারলো? ହେଇଗଲା? ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫ୍ଲକ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ हाँ हेलो ଖାଇ ଦେଇଥା ପଇସାଟା ଦେଇକିନା ମୋ ନାଁରେ। ହଁ ତୋର ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ସିମେଟ୍ରିକାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ରଖା ହେଇଛି ମଝିରେ, ଏଇଠୁ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଧର x, এইটু x, এটা রেডিয়াস r, flux through the cylindrical surface, cylindrical surface ସବୁ ବାହାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, cylindrical surface ରେ କେତେ ହବ ପଚାରୁଛି। चार्ज एनक्लोज ହେଇଛି ମାନେ ଗସ୍ ଲସ୍ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, বা ଯଦି ସିମେଟ୍ରିକାଲି ତାକୁ ଏନକ୍ଲୋଜ କରି ହେଉଛି ତାକୁ ଏନକ୍ଲୋଜ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ହବ
फॉर्मूला सही है टोटल फाई सदाबले क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन टोटल माने केतेटा सरफेस अछि देखो नंबरिंग कर दोची एटा एक नंबर सरफेस एटा दुई नंबर सरफेस आ एटा सब बढ़िया डाटा दे दैछि एटा तर थीटा तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 थ्रू 2 एंड cylindrical surface मिसी की q by epsilon नॉट अब एठी देखो जो सॉलिड एंगल बनै छिए हैला दैट इज q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta into 2 दुटा से बढ़िया ना फाइ 2 रो भी सेति फाइ 1 भी से फाइ 1 जेति की हां 1 जेति की 2 भी सेति कोन भाई ये भी सेति एंगल एग्जैक्टली बनै छी into 2 plus phi cylindrical मिसी की q by epsilon naught हैला तो 2 2 get cancelled तो cylindrical surface रे flux q by epsilon naught एपटी गले माइनस हबो cos theta 1 minus 1 plus cos theta 1 and minus 1 cancel cos theta that will be q by epsilon naught cos theta से ट्रायंगल लिखि परिबा हमें x by r square plus x square रो square root बुझ परलो के q by r square कोन पाए हो रे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखुछु के q by r square आसीओ फ्लक्स लिखा हो जेठी के कोड आसीओ के q by r square एक्सप्रेशन गुडा सब डायमेंशनल भी करेक्ट हवा कथा जो एक्सप्रेशन गुटे कहउछो डायमेंशनल ठीक अछि ना ठीक भाबियो तापर तुम बोर्ड जो वाला क्वेश्चन आसे देखो a cube has side length L meter sorry side length L equal to 0.2 meter देछि इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 I cap minus 4.2 J cap डायग्राम दे देछि बहुत सहज क्वेश्चन न देखि माने भाभी देले हिजो क्यूब टा हला एटे जो क्यूब टी अछि ए बडा रखा है क्यूब टा फ्लक्स थ्रू द क्यूब बहुत सहज क्वेश्चन
डायग्राम ड्रॉ कर देले पाई आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप वाला आई कैप रे ड्रॉ कर दियो जे कैप वाला जे कैप रे ड्रॉ कर दियो तापर टी भाबो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाउछ भाइबनी सारा वायर पास करछि बोली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडा को ड्रॉ कर दियो ए डायग्राम रे तापर देखो थ्रू द क्यूब केते फ्लक्स अछि नेट रे बहुत सहज से कहूँ ये किसी माने सॉल्व करिया पड़िबोनी डायग्राम ड्रॉ कर दियो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केते एंट्री करूची क्यूब देखी केते एग्जिट करूची वेरी गुड अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अछि ना तो जेतिके एंट्री होची सेतिके एग्जिट भी जाउची धर 2 पॉइंट आई कैप 2.5 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छुड़ाई भला जाइथिबो -4.2 जे कैप से इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ाई भला आस्थिबो जेतिके इलेक्ट्रिक फील्ड सब यूनिफॉर्म अछि तो जेतिके इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होची गोटे साइड आरो पटे सेतिके बाहरी जाउची ना जीरो आंसर सरला नेट फ्लक्स ही जीरो तो चार्ज एनक्लोज कोड अछि मीनिंग बुझले अधा काम होई छी फार्मूला क्वेश्चन नेक्स्ट तोरा इनसेट उडे भला क्वेश्चन अछि सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन से कोन करछि इलेक्ट्रिक फील्ड रे कांस्टेंट नहीं मु तार एग्जैक्ट येटा करूनी अल्फा x टू द पावर हाफ ना कोन दिछि इलेक्ट्रिक फील्ड हैला तो एटा भला सेटअप टा दिछि क्वेश्चन रे ये तोर x एक्सिस ये तोर y एक्सिस ये तोर z एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप रे अछि ओनली आई कैप रे आ कोठी नाही हैला ताले एठी पचारिबो फ्लक्स केते थ्रू द क्यूब फ्लक्स केते पचारिबो चार्ज एनक्लोज पचारिबो ए सब क्वेश्चन आसी आई कैप रे अछि तो एपटे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री होउची एपटे बाहरुची आई कैप रे किंतु अछि किंतु x सहित बढ़ी बढ़ी चली एपटे x रो वैल्यू 0 हालांकि सेटे तुम क्वेश्चन रे क्यूब टा उठी आगे आड़े रखी तो x रो वैल्यू सेटे उठे अछि साइड गुडा सब ए बोली देथिबो क्वेश्चन चले ए जो एरिया टी देखुछ एटा हला स्क्वायर अन्य कौन सी सरफेस को देखिबार नहीं एटा इलेक्ट्रिक फील्ड तारो भाई बोने पुणी इलेक्ट्रिक फील्ड ए सरफेस रे एंट्री होउची ए सरफेस रे एग्जिट करूची तो एटा को एक नंबर सरफेस ना दोउची एटा को 2 नंबर सरफेस दोउची आउ कौन सी सरफेस रे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एंट्री एग्जिट नहीं खाली दीटी सरफेस तो जो टोटल फ्लक्स टी लिखिबी phi1 और phi2 phi1 0 हो कोन भाई एठी इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू 0 एक्चुअली एभला लिखथांती E1 धरडे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू E1 एटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बाहर को
इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू चेंज होची तो E1 आ cos 180 डिग्री तो लिखाई था E1 into a cos 180 এই জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড ভ্যালু E2 एरिया वेक्टर बाहर को cos 0 डिग्री E2 a cos 0 डिग्री बुझल नहीं तो E रो वैल्यूटा ए हिसाब रे चेंज होता अल्फा गोटे कांस्टेंट जेहेतु x टा एठी 0 तो E1 0 हो गला तो तो पाई रहला आंसर E2 a एरिया E2 रो वैल्यू अल्फा इनटू a टू द पावर हाफ एरिया हला स्क्वायर हला तो अल्फा a टू द पावर 2 5/2 जा बाहर सब डाटा फाटा देथियो तो एटा हला टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब flux through the cube q enclosed by epsilon naught तो q enclosed केते लिखिबी flux through the cube into epsilon naught that is alpha epsilon naught a to the power 5/2 तो डाटा देखियो तो कैलकुलेट करिया पय पड़ियो बुझ पाला got my point हला नेक्स्ट देखिए बाहर करियो रिलेटिवली इजियर इट इज स्फीयर एटा गोटे सीट एंट्री करिछि सिग्मा रॉड नु दिस इज सीट सेंटर रो x दूरी यार रेडियस r फ्लक्स थ्रू द स्फीयर try to find it out solve it सिग्मा बोधे ठीक अच्छे लगुच तो सीट टे अच्छी ता भीतर माने भाबी दे एमती भाब ताले केते सितरे इनक्लूसिव चार्ज खाली लिखार अछि एई सीटा भीतर अछि माने एती काटी दोन भाबी ने लेंबू लेंबूटा गोटू काटी दे
যদি কাটি দবু ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି এটা ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଟାଇପ ର ଥିବ ବାକି ତ ଅଛି ଆଗଟେ ଆମ କିନ୍ତୁ ଏନକ୍ଲୋଜ ତ ଏତିକି ରହିଛି ତ ୟାର ରେଡିୟସ୍ ଏଇଟା এইটা সেন্টার ରୁ x দূରରେ ଅଛି এইটা এটা স্মল r তো স্মল r টি ହେଇଯିବ r স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ର স্কয়ার ରୁଟ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଏନକ୍ଲୋଜ सिग्मा इनटू एरिया लिखिबा ଏବେ ଏଟର ଏରିଆ କେତେ ହେବ ପାଇ ସ୍ମଲ r ସ୍କୟାର ତ ପାଇ सिग्मा r स्क्वायर बुझ परलो तो एवढा नीट रे क्वेश्चन आसी परिबो पाई सिग्मा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट वेरी गुड सही सुन ठीक r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो प्लस हैला नेक्स्ट देखिया मोटे क्वेश्चन electric field is given फोर I cap plus 3 y square plus 2 j cap pierces through a electric field passes through a cube of side 1 meter like this placed at origin एमती origin रे रखा है हैला net charge find the magnitude of net charge enclosed within the cube find the देखिबा करि परछन नाही net charge enclosed within the cube समर्पित रे कोन कटि गेला हां कह आउ थे टिके रिफ्रेश कर दो मतलब जे नेटवर्क के प्रॉब्लम हेथिबो ये तो अछि ओहो हो रख कर दो
क्वेश्चन करो क्यू एंड क्लोज बढ़िया क्वेश्चन टे बोर्ड रे आसला भलिया क्वेश्चन अब टिके चेष्टा कर पाखापाखि आंसर पहुंची टिके चेष्टा कर बढ़िया करिछु गुड वेल ट्राई वाओ वेरी गुड बढ़िया होची कोन कहू होनी बोली तो किछि डरिवार ना इक्वेशन को देखिकी तू कहबो इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे एक्स एक्सिस रे अछि आ गोटे वाई एक्सिस रे अछि एति तो कथा आ कोन गोटे एक्स एक्सिस रे अछि गोटे वाई एक्सिस एक्स को आगे भाबी दे सब तो स्केलर जिंस ना तुम एक्स कथा भाबुछ एक्स रे देखे इलेक्ट्रिक फील्ड ता जीरो होना नहीं ए फ्लक्स ता जीरो होना नहीं कोन भाई यूनिफॉर्म अछि जेतिके एंट्री करूची सेतिके बाहरी जाउची होना नहीं तो या पे जीरो फ्लक्स बट डायरेक्ट लिखि दउ जेबे ए जो ब्लू कलर पे फ्लक्स केते हबो जीरो एक्स एक्सिस पे जहां रहबो वाई पे रहबो तो वाई रे देखो वाई एक्सिस सहित से वेरी करूची वाई एक्सिस सहित वेरी करूची फील्ड जेमती करथिली ए जगह रे e1 लिखिबी भीतर को एंट्री होची e1 ए जगह केते हबो y वैल्यू 0 तो 3 into 2 6 जे कैप ऊपर को एरिया वेक्टर कोड को तळ को केते देछि साइड 1 मीटर तो 1 स्क्वायर हैला तो 8 रे फ्लक्स तळे फ्लक्स एटा 1 बोल लिखि दोछि -6 बुझ परलो ऊपर रे एठी e2 y आसी गला 1 तो 9 हे गला y रो वैल्यू एठी 1 ए जगह रे y रो वैल्यू 1 एठी y रो वैल्यू 0 थिला तळ सरफेस रे तो 1 हे गला माने 1 + 2 3 3 into 3 जे 9 बधे आ एरिया वेक्टर भी ऊपर को 1 तो एठी फ्लक्स हे गला 2 नंबर जगह रे 9 + 9 बुझ परलो तो टोटल फ्लक्स 9 ये -6 तो +3 तो आउटवर्ड फ्लक्स that is equal to charge enclosed by epsilon not solve very simple लेखा ही बहुत कैडेट देखो मीनिंग बुझो हैला क्लियर तो फ्लक्स फ्लक्स टा तुमरो एटा गोटे माने भलो टॉपिक सहज रे करि परिबो तो फ्लक्स माने तुमको सदाळे भाबिबार अछि क्लोज सरफेस अछि कि क्लोज सरफेस नाही ताको सिमेट्री किछि अछि कि हैं नॉले थ्योरेटिकल क्वेश्चन रे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम भाबी करि परिबो ए सब दिमाग रे एकाळे चलथा कथा खाली फार्मूला घोषणी इजटे खाली फार्मूला घोषला न प्रॉब्लम हो आगो बुझो जिंसटा नेक्स्ट तो गोटे जिनस शिखा एटा नाही तमर बोर्ड रे नाही मु खाली कहबी एटा एक्स्ट्रा जिनस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर माने फर्स्ट टॉपिक एठी तुम सरला तुमरो डाइपोल तो पढ़ाई छी ना डाइपोल तुमर पढ़ाई छी कि ना डाइपोल पढ़ाई नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाई नहीं बोधे हां तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट कर दो इंपोर्टेंट टा पछे कर इलेक्ट्रिक डाइपोल
सहजटा आ एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक तो ये गोटे क्वेश्चन रु स्टार्ट करी थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a net charge 0 is 0 always नेट चार्ज तो पाखे 0 अच्छी मान जी प्लस से माइनस ता लगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होबो ट्रू और फॉल्स पछरे एबोले थ्योरेटिकल क्वेश्चन शेष बेले देखिए आपको क्वेश्चन था ये आपको पढ़ी पढ़ी चलने तुम ऑटोमेटिक आंसर पाई पाई चलिए यस फॉल्स तो ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाई कहले 2 पोल कहले दीटा को पोलैरिटी प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस equal and opposite charges separated by a distance constitute an electric dipole. Okay, that means this is, let this is the minus charge, this is the plus charge, they have some separation, this distance is let some L, this is an electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और खाली डाइपोल मोमेंट भी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट this is a vector quantity represented by the vector p that is charge into separation and the direction is from negative to positive. So it is a vector. Okay, so its direction is somehow like this. तो रियल वर्ल्ड रे बहुत काम आम कौन सी मटेरियल नबा मॉलिक्यूल्स धर हाइड्रोजन कथा कहली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 तो तार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भितर किछि माने न्यूक्लियस तार गोटे थिबो तार गोटे न्यूक्लियस अछि ता सहित ता चारिपटे इलेक्ट्रॉन गुडा अछंती तो इलेक्ट्रॉन रो सेंटर भी एठी होउछि माने एठी कोनोसी प्रकार सेपरेशन नाही हाइड्रोजन क्लोरीन एटा कोनोसी प्रकार सेपरेशन नाही तो यांकर डाइपोल मोमेंट रो वैल्यू केते हेबो 0 एमानं कहा जाय नॉन पोलर तांकर पोलैरिटी नाही किंतु मु लिखि देले HCl एटी दीटी मॉलिक्यूल दीटा आयन पळे आसला बा दीटा एटम दीटा स्पीशीज पळे आसला हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पळे बिहेव करिवे तांका भीतर किछि सेपरेशन रहे कि नहीं सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस एटा भी सेपरेशन रहिबो तो डाइपोल मोमेंट गुडा आसीबो नेगेटिव रो पॉजिटिव आड़ बुझे नहीं तो एटा सब कह जिवो पोलर जार पोलैरिटी थिबो पोलर धरो वाटर मॉलिक्यूल H2O ऑक्सीजन एमती थाए एमती हाइड्रोजन तो डाइपोल गोटे एटा आउट डाइपोल एटा बुझो कि नहीं एटा धरो P1 बा P एटा P याको भीतर किछि थीटा एंगल थिबो तो रिजल्टेंट एमती हो एटा P नेट जाहि बाहरिबो रिजल्टेंट
बुझौछि सो एउडा कह जिवो पोलर बुझौछि तो लेट मु गोटे करूछि क्वेश्चन ध्यान दबो धर एठे गोटे चार्ज मु रखिछि प्लस 3q एठी अछि माइनस 2q एठी अछि माइनस q ए सिस्टम रो नेट डाइपोल मोमेंट बाहर करे अछि ए सब इक्विलैटरल साइड सब ए नै जाओ ए 6:30 जाए क्लास करिवे म 7टा बेलू पुणी गोटे क्लास अछि तो फाइंड इट आउट ओके तार किछ आंसर गोटे हिची हेगला देखिबा आमे देखिबा नेगेटिव आउ इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटा देखो -2q अछि मोर गोटे +2q भाबी दउ जाको तो 3q रो 2q पळे गला तो नेगेटिव रो पॉजिटिव चार्ज अडको चार्ज हला 2q सेपरेशन हला a एटा हला तार p1 तापरे आ गोटे वेक्टर -q रु एटा -q आ गोटे +q ये हे गला 3q बुझला तो ए वेक्टर एमथी एटा p2 चार्ज हला q सेपरेशन हला a एटा हला p2 तो दिटांग वेक्टर भीतर एंगल केते 60 डिग्री तो p नेट p1 रो स्क्वायर p2 रो स्क्वायर p1 p2 समान नहती 2 p1 p2 cos 60 रो स्क्वायर रूट cos 60 and 2 get cancelled तो एटा हला qa यार स्क्वायर 4qa
क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ये हला क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर p1 into p2 2 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर तो √7 क्यू into a बुझेला आउट दूच 4 चार्जेस अच्छे सब ओरिजिन रो ए डिस्टेंस 4 पॉइंट चार्जेस all at a distance from origin as shown डायग्राम दूची पूरा डायरेक्शन सहित कहबो एटा x axis this is your y axis एठी चार्ज -2q एठी हला +2q एठी हला q एठी हला 3q रोट के चेकिंग करू एटा -q हो गला हे नहीं रो -2q हला +2q ये कैंसिल हो -2q ये कैंसिल हो +2q कैंसिल हो ओह हाँ हाँ सॉरी हो गला देखो एटा -2q अछि एटा 3q दउछु मु एठे -2q एटा हला +q एटा 3q एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस हाँ बाहर करो मेरा 6 हो √6 हो नहीं p1 ना ना ठीक अच्छे
सब डिस्टेंस है ओरिजिन रू समस्त ए रे रखा यही सेटअप रो बाहर कर डाइपोल मोमेंट हेला आंसर 2q को डायरेक्शन ठीक कर डायरेक्शन को समर्पित ठीक अच्छे साई सम भूल कलु आग इक्वाल चार्ज सेपरेशन देख एठी अछि -2q एठी अछि -2q तो एटा भाबी दे गोटे +2q तो गोटे डाइपोल एटा मा नेगेटिव रो पॉजिटिव एठी अछि -2q एठे भाबी दे +2q एटा तो दीटांगर चार्ज और सेपरेशन समान तो या वेक्टर एडे ए वेक्टर तार अपोजिट रे तो ए जण कैंसिल हेबे बट थोड़ी ना +2q अछि तो गोटे काम करूची मु भाबी नउची आ गोटे -q तो हे गला +2q -q प्लस q आसी गला सिमिलरली 3q अछि तो आ गोटे q भाबी दियो ये भी गला 3q दैट मींस मो पाखे दीटा रहला बुझला एटा चार्ज सेपरेशन केते हबो 2a सेटा से कहिछि सो q into 2a जे क्या बुझ पारलो तो नेक्स्ट क्लास रे देखिबा हमें काली जल्दी हबो क्लास नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा या लगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स गुडा केमति होय लास्ट पार्ट यारो ए टॉपिक रो सॉरी चैप्टर रो हैला आज पैंती